Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I, Surbhi Jaggi, welcome you all to your science class. But before starting our today's topic, I would like to say something. As you all know, pandemic is going on. COVID-19 is at peak right now. The condition of our country is very, very serious. So I request you all, please don't go outside. Take necessary precautions, wear your mask, wash your hands or sanitize your hands at regular intervals. Please stay home and stay safe. So let's start with our today's topic. So today we are going to start with a new chapter, that is chapter 3, fiber to fabric. So we have done with the PT1 syllabus, that is chapter 1, where does our food come from, and chapter 2, components of food. So we are going to start with a new chapter, that is fiber to fabric. In this chapter we are going to learn about what is fiber, what is fabric, different types of fiber, how fiber is converted to fabric. This chapter is all about fabric, and you know that our cloth is made up of fabric. So today we will see the introduction of this chapter. Okay, then let's start with the chapter. So, topics to be covered in this chapter are what are fibers, what are fabrics, types of fibers, and the journey of fiber to fabric, where we discuss about ginning, spinning, weaving, knitting. Okay, so let's start. So, a lot of you come across the term fabric. What is fabric? Fabric is about the material of your cloth. Okay, so why do we wear clothes? हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? बिकॉज वी वियर क्लोथ्स टू मेनली प्रोटेक्ट आवर बॉडीज राइट अगेंस्ट द वेदर स्ट्रॉन्ग सनलाइट एक्सट्रीम कोल्ड और हीट एंड रेन. Clothes also protect us from insects also. We also wear clothes to make ourselves look smart. That is why many of us want to wear clothes according to the latest fashion. The traditional clothes worn by people vary from region to region. So the kind of clothes people wear it depends on the climate of the place. Okay. So जहाँ पे आपका warm climate है वहाँ people क्या पहनेंगे? Cotton clothes. Women wear saris, salwar kameez और घाघरा चोलीज, while men wear trousers, shorts, dhotis, lungis or pajamas with kurtas or shirts. Winters in northern parts of the country, people wear woolen or a couple of layer of cotton clothes. Okay, so our country has always been famous for different fabric. And fabric क्या है आपका? जो भी आप कपड़े पहनते हो, that is called fabric. आपके clothes किससे बने होते हैं? Fabric से बने होते हैं, right? Visit to a cloth market will reveal the different kinds of fabric available today. सो वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. हाउ दे डिफर इन टेक्सचर, शाइन, थिकनेस, कलर, मटीरियल, व्हाट दे आर मेड अप ऑफ. ओके, सो व्हाट आर फाइबर्स? फाइबर्स क्या होता है? ओके, फाइबर इज समथिंग विच फैब्रिक इज मेड अप ऑफ, राइट? फैब्रिक इज मेड अप ऑफ फाइबर. So you might be curious to touch the fiber. So you can take any cotton cloth, just try to observe the corner of the cotton cloth. Okay, and what you have to do, just आप cotton thread भी ले सकते हो. Twist its edges with your thumb and fingers. By doing so, what you will be able to do, you will be able to do loosen the strands of thread. The thin strands of thread क्या है आपका? धागा. The thin strands of thread are called fibers. Okay, do you understand? So again मैं एक बार और समझाती हूँ. If we take one thread is धागा. Okay, at the end of the thread you just try to spread that thread. जो उसके corners हैं उसको thread को spread कर रहे हो, right? So जब thread को आप spread करोगे, what you will see, thinner strands of the thread, they are called fibers. Okay, these small and thin strands are called fibers. A lump of cotton is a collection of a large number of fibers. So cotton is a fibrous material, or you can say cotton is a fiber. We can now define fibers. क्या होते हैं fibers आपके? Fibers are very thin thread like strands from which fabric is made.
Some of the examples of fibers are cotton, wool, silk, flax, jute, nylon, polyester, polyacrylic, right? आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या कहें वॉट आर नाउ आई थिंक आप लोग बता सकते हो फाइबर क्या है फैब्रिक क्या है राइट fibers they are very thin strands of thread okay so when we talk about fiber and fabric we will talk about how these fibers are assembled together to make a fabric okay so let us see the types of fabric or you can say types of fibers. So first type of fiber is natural fibers. What are natural fibers? There's fibers. Nature. Natural means the thing which is obtained from nature. So the fiber which are obtained from natural sources like plants and animals are called natural fibers. Natural fibers are collection of tiny threads obtained from plants and animals and the example of natural fibers are cotton, wool, silk, flax and jute. Okay, so cotton, flax and jute fibers are obtained from their respective plants. Wool is most commonly obtained from sheep. Sheep hairs constitute wool. How ये wool की आप wool कैसे obtained होता है this you will learn in your class 7th okay wool and silk in class 7th आपका same chapter है fiber to fabric where you will learn about the animal fibers okay in this chapter हम किस में plant fibers में mainly focus करेंगे okay so you can see some of the examples of natural fibers cotton jute flax coir hemp okay so cotton you know cotton is very light and porous and is best for summers porous मतलब उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं airy okay and wool is warm and meant for winters silk is gorgeous and lustrous मतलब shiny okay jute is rough and tough and meant for gunny bags mats and ropes okay now what are the advantages of natural fabrics or natural fibers आपके क्या advantages होते हैं that they absorb more water and sweat okay so they allow air to pass through them अभी जैसे मैंने बताया porous होते हैं right they are biodegradable and do not affect the environment means that they do not cause pollution okay so cotton fabric you know that is very soft and comfortable it easily absorbs moisture and allow it to evaporate that is why cotton clothes keeps the body cool and are ideal for summer okay disadvantage some of the disadvantages of natural fabrics are वो अपनी creases they do not retain their creases for long आपको पता है आपको कॉटन जो फैब्रिक्स होते हैं उनको आपको आयरन करने के लिए देना ही पड़ता है बिकॉज दे डू नॉट रिटेन देयर क्रीजेस फॉर लॉन्ग एंड ऑल्सो दे मे श्रिंक ऑन ऑर्डिनरी वॉशिंग आफ्टर फर्स्ट वॉशिंग वॉट यू विल सी दैट वो श्रिंक हो जाते हैं उनका साइज स्मॉल हो जाता है दे कैन ईजिली बी अटैक्ड बाय मोथ्स एंड मोल्ड्स मीन्स इंसेक्ट से वो ईजिली अटैक्ट हो सकते हैं दे डू नॉट ड्राई रैपिडली बहुत जल्दी से सूखते नहीं हैं एंड नेचुरल सिल्क इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट क्वाइट अफोर्डेबल सो आपके जो नेचुरल फाइबर्स आते हैं होते हैं और फैब्रिक्स होते हैं दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव ओके सो व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स आपके कौन से सिंथेटिक फाइबर्स कैन सिंथेटिक फाइबर्स आपके होते हैं द आर्टिफिशियल इसका अदर नेम होता है आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर्स आर आर्टिफिशियली मेड फ्रॉम केमिकल्स इन द इंडस्ट्रीज एग्जाम्पल्स सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आपके कौन से हो गए हैं पॉलीएस्टर नायलॉन एक्रिलिक आर सिंथेटिक फाइबर्स सो व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स जो आपके केमिकल सब्सटेंसेस से बनते हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं राइट यू कैन सी सम ऑफ द पिक्चर्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स ये नायलॉन आपका रोप बनाने में यूज़ होता है राइट सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स दैट दे आर मोर ड्यूरेबल एंड ईजी टू मेंटेन उनको हमें आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती दे आर वेरी ईजी टू मेंटेन एंड दे आर मोर ड्यूरेबल
ज़्यादा चलते भी हैं. दे डू नॉट एब्जॉर्ब मच वाटर, ड्राई अप फास्ट एंड रिंकल फ्री. रिंकल्स तो पड़ते ही नहीं है उसमें. सिंथेटिक क्लोथ्स आर नॉट अटैक्ड बाय मोथ्स एंड molds. And some of the disadvantages of synthetic fibers that they do not allow the air to pass through them and hence are not good for summers. So they do not absorb sweat. In summers, if you prefer to wear synthetic fibers, what will happen? आपको स्वेटिंग बहुत होगी, राइट. गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी. वाई? बिकॉज दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट. दे कैन ईजिली कैच फायर. दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल. दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. ये पॉल्यूशन कॉज करते हैं. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं विच कैन ईजिली डिकम्पोज, जो ईजिली डिकम्पोज हो सकते हैं थ्रू द एक्शन ऑफ बैक्टीरियाज. ओके. एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? जो ईजिली डिकम्पोज नहीं हो सकते. दे कॉज पॉल्यूशन. ओके. सो mixed fibers are also there. The fibers that are made by blending natural fibers with synthetic fibers to obtain more superior and useful fibers are called mixed fibers. Examples are terrycoat. Terrycoat किससे मिलके बना है? Terylene plus cotton. Okay, so that's all for today. In our next class, we'll learn about identifying fabrics and some of the plant fibers. Okay. Bye everyone. Have a nice day. Take care.